consideration while evaluating the record. So consideration of evaluating the record means when a reviewer is examining the assurance services which is rendered by the practicing units. So at that moment of time, which kind of consideration the reviewer has to take? Determine that any significant issue, matter, or problem that arose during the course of the engagement have been appropriately considered, resolved, and documented. So the reviewer at the time of reviewing the assurance services which is rendered by the practicing unit, whether there is any significant issue where they have taken care of it, any matters or problems, which is appropriate. Same way, and whether appropriately considered, resolved and documented. So practicing unit ने उसी चीज को जब वो अपने एश्योरेंस सर्विस अपने क्लाइंट को सर्विसेज रेंडर कर रहे थे तब उसको अच्छी तरीके से कंसिडर किया है, उसको रिजोल्व किया है, and appropriately it should be documented. Determine that the adequate audit evidence or other relevant evidence in relation to the engagement is obtained to support the reasonableness of the conclusion drawn. So प्रैक्टिसिंग यूनिट ने जब भी एश्योरेंस सर्विसेज अपने क्लाइंट को रेंडर की है तब उन लोगों ने सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए है और उसके ऊपर से वो जो भी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो अप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे. दैट व्हाट इज द रिव्यूअर विल लुक इनटू and determine that the significant decisions relating to the engagement, use of professional judgment, resolutions of the significant matters have been properly documented. So this all will be subject to consideration of the reviewer. Is it clear, dear students? Yes, sir. Okay. Obligations of the parties. Obligation of the party means one is the practicing unit, another is the reviewer. So what is their obligations? So let's understand. Any practicing unit, in addition to the prescribed information to be furnished, including the questionnaire, statements, this is too much, huh? Who is this one? I will, Sir, sorry, unknown. I will go to the recordings. Sorry. Okay, I will do that. I will restrict him in the manage permissions and I will not allow because currently I allowed everyone in the meetings, right? So I will allow only the people in my organizations. So now he or she cannot join. I have a number of options, huh? So I can, I will not allow the attendee to allow the mics. So later on, if I will keep this, nobody will able to. I have all the options, to be very honest, right? So those who think or those who able to see that I can do, no, you cannot, right? Unknown users is already left, and I will not allow the entry into the meetings. Anyway, so I think now he or she, whoever it would be, would not be able to join the meetings. So fair enough, right? अब वो request माइक बंद कर दो. हाँ सबका माइक बंद कर दो ना, आप ही म्यूट रखो ना. किसी को पूछना होगा तो वो हैंड रेस कर रहेगा. वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, लेकिन इट्स ओके फाइन. अभी वो नहीं आया कर सकता, वो ज्वाइन ही नहीं हो सकता. ठीक है.
So no worries at all. Anyway, come back to here. What are the obligations, or means what are the duties and responsibilities of the practicing unit? So any practice unit, in addition to the prescribed information to be furnished, including the questionnaire, statements, or other particulars as the board may deem fit, shall comply with the following. So obviously, a practice unit who wants to carry out their peer review, they have to make an applications to the peer review board, and in peer review board they have to fill up the questionnaires, statements, and so many other things as the board may थिंग्स फिट. सो वो तो उसने फॉलो की ही होगी, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो तो प्रैक्टिस यूनिट को प्रोवाइड करनी ही करनी है. along with that, produce to the reviewer or allow access to any record, document, or prescribed registered maintained by the practicing unit, or any other record or document which is of a class or description so specified and which is in the possession and control of the practicing unit. So reviewer अपना काम अच्छी तरीके से रिव्यू कर सके, practicing unit ने जो जो भी एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की है उसको अच्छी तरीके से रिव्यू कर सके, और क्या प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अपने क्लाइंट को एक क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की है कि नहीं की है, उसके लिए प्रैक्टिसिंग यूनिट को रिव्यूअर को अलाउ करना पड़ेगा ऑल द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, राइट, दैट all that they have to give the cooperation and assistance. Provide to the reviewer such explanations or further particulars or information in respect of anything produced in compliance with the requirement under subsection 1 above as the reviewer shall specify. So वो भी provide करनी पड़ेगी. Provide to the reviewer all assistance in connection with the peer review. In short, when an auditor goes for the purpose of audit to their clients, whatever the cooperations or assistance which is provided by the client to the auditor, same way over here, as the practicing units wants to carry out their firm's peer review, they also have to provide all the assistance to the reviewer. Where any information or matter relevant to a practicing unit is recorded otherwise than in a legible form, the practicing unit shall provide and present to the reviewer a reproduction of any such information or matter or of the relevant part of it in a legible form. तो obviously वो पढ़ सके उसी हिसाब से वो होना चाहिए, इस तरीके का वो मटेरियल होना चाहिए. जैसे कि आप बहुत कंप्लेन कर रहे हो सर ये मटेरियल रीडेबल नहीं है, लाइक यहाँ पे तो अच्छा लिखा है कि अप्रोच ऑफ रिव्यूअर, but so many where the Xerox copy is not appropriate, you are not able to identify what it is written. So obviously it should be readable in the form, right? वो होना चाहिए. Then legible form with translation into English or Hindi if the matter is in any other language and if such translation is requested by the reviewer. अगर रिव्यूअर ने बोला है कि आप हिंदी या इंग्लिश में मेरे को दीजिए तो देना पड़ेगा, because all of you know that in some of the areas of our country they do not follow the English and the Hindi, they follow their own version, right? So if that material is available, but you are a reviewer and you are not comfortable with that vernacular language, then obviously you can request to provide in English or Hindi. The practice unit shall be responsible and accountable for the accuracy and truthfulness of the translation so provided. So obviously it is the responsibility of the practice unit to provide the true and fair information to the reviewer. तो ही रिव्यूअर अपना काम अच्छी तरीके से कर सकता है. Reviewer, what is the responsibility, or you can say the duties and obligation of the reviewer? The reviewer shall not take any extract of the practicing unit, right, or client file or record examined by him while conducting the peer review.
as a part of his working paper, right? So reviewer shall not take any extract of the practicing unit's client's file or record, examine, right, by him while conducting the peer review as a part of his working paper. The reviewer shall complete and review within the prescribed time frame. So जब peer review board ने reviewer को peer review task assign किया होगा, तब जो भी time frame दिया होगा उस time frame में reviewer को अपना काम complete करना होगा. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, fine. Now stage is how the peer review entire process is conducted by the peer review board. So selection of practicing unit and appointment of the reviewer. This all will be done by the peer review board. Actually पहले ये पढ़ना चाहिए और उसके बाद ये पढ़ना चाहिए था, right? लेकिन let's quickly understand this. है ना? Notification to the practicing unit. The practice unit should be notified of its selection for the peer review. So peer review board है वो practicing unit को notified करेगी कि आपका अभी peer review के लिए selection हो गया. Obviously peer review practicing unit ने peer review board को application भेजा होगा. तो peer review board है उनके पास है तो number of practicing units के application आती रहती है. तो उसके अंदर वो जो भी जिसने पहले एप्लीकेशन की है उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करते जाएंगे. सो peer review board will give their information that the particular practice unit has been selected for peer review. Submission of declaration. A declaration in the form approved by the board. Board means peer review board. Shall be submitted by the practicing unit within 7 days from the date the practicing unit has been notified by the board, so that the reviewer to be allotted from the panel of the reviewers can be identified by the board as per the level submitted by the practice unit in the declaration form. तो जो भी प्रैक्टिस यूनिट सिलेक्ट की गई है पीयर रिव्यू करने के लिए उसको बोर्ड को डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, सो दैट विद इन 7 days जहां से पीयर रिव्यू बोर्ड ने उस फर्म को पीयर रिव्यू करने के लिए सिलेक्ट किया है उसी दिन है ना उसके 7 दिन के अंदर प्रैक्टिसिंग यूनिट को अपना डिक्लेरेशन पीयर रिव्यू बोर्ड को दे देना है ताकि पीयर रिव्यू बोर्ड एक रिव्यूअर को आइडेंटिफाइड करके एलोकेट कर सके. सिलेक्शन ऑफ रिव्यूअर. The name of 3 reviewers shall be recommended by the board to the practice unit so selected. The practicing unit shall select 1 out of the 3 reviewer and intimate to the board within 7 days of the receipts of the name. तो peer review board है वो उनके पास जो रिव्यूअर के तरीके एलिजिबल है और एम्पैनल्ड हुए जो भी रिव्यूअर की क्वालिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं वो जो क्वालिफाइड है और जिन लोगों ने एज ए अप्लाई किया है पीयर रिव्यू बोर्ड को कि हम एज ए पीयर रिव्यू काम करना चाहते हैं पीयर रिव्यूअर की तरीके, तो उसमें से 3 फर्म को चूज किया जाएगा और जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है जो अपने आप को पीयर रिव्यू करवाना चाहती है उनको वो तीनों नाम भेज दिए जाएंगे. वो 3 में से कोई एक फर्म को पीयर रिव्यू यूनिट को है ना पीयर रिव्यू जिसका हो रहा है मींस प्रैक्टिसिंग यूनिट को उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है और अपना नाम 7 दिन में peer review board को बताना है. Concept of the reviewer. The board shall intimate the reviewer so selected and seek his consent within 7 days. तो practice unit अपना नाम जो 3 में से है वो किसको भेजेगा? peer review board को. और peer review board will intimate that कि you have been selected by so and so practicing unit as a reviewer. तो क्या आप उसके रिव्यूअर के तौर पे काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? वो रिव्यूअर के पास से भी कंसेंट लेने का काम पीयर रिव्यू बोर्ड का है. आ रहा है बच्चों समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then stage number 2, step number 2, that is the planning. Information to be furnished by the practicing unit on intimation by the board of the reviewer's consent. And the practicing unit shall within 15 days furnish the following information to the reviewer. तो अभी रिव्यू ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, रिव्यूअर ने भी अपना कंसेंट दे दिया है कि मैं रिव्यू करने के लिए तैयार हूं, तो उसके 15 दिन के अंदर जब
बोर्ड को कंसेंट मिल जाएगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को रिव्यूअर का कंसेंट मिल जाएगा, तो पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिस यूनिट को बता देंगे कि आपके रिव्यूअर ने आपको सिलेक्ट कर दिया है, उसने कंसेंट दे दिया है और वो अभी आपको रिव्यू करने का काम शुरू करेंगे। तो उसके 15 दिन के अंदर, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोर्ड को देनी है। बोर्ड विल हैंड ओवर दैट इंफॉर्मेशन टू द रिव्यूअर। Duly filled in questionnaire sent by the board, complete list of assurance services, the client indicating the nature of services provided and the fee charged, a note on the policy and procedure adopted by the practicing unit in relation to the independence, staff supervisions and development, second person's review, and the process generally followed in carrying out the assurance services. Detail of any proceedings against the practicing unit or any of its member or qualified assistant relating to the investigations or allegations of deficiency in the conduct of attestation functions by them during the period of 3 years preceding the period of review or at any time thereafter. That means till the date of submission of the duly filled in questionnaire. तो ये चारों चीजें अच्छी तरीके से प्रैक्टिसिंग यूनिट को, है ना, बोर्ड को फॉरवर्ड करनी है। और बोर्ड को फर्निश करने के बाद में एक्चुअली तो अभी रिव्यूअर अपॉइंट हो चुका है, रिव्यूअर ने कंसेंट भी दे दिया है, तो रिव्यूअर को ये सारी इंफॉर्मेशन 15 दिन के अंदर दे देनी है। कंप्लीट क्वेश्चनर, है ना, बोर्ड को भेजना है, बोर्ड ने जो भेजा है वो कन्वेन, बोर्ड ने क्वेश्चनर भेजा होगा, आपको फिलअप करके वो क्वेश्चनर रिव्यूअर को सबमिट करना है। आप प्रैक्टिसिंग यूनिट ने जो जो भी पिछले 3 साल में, यहाँ पे लिखा नहीं है बट पीयर रिव्यू इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द पास्ट 3 इयर्स, सो 3 इयर्स में प्रैक्टिस यूनिट ने जो भी एश्योरेंस सर्विसेज दी होगी, है ना, विद द फी चार्ज, उसका लिस्ट, then whatever the policy and procedure they have adopted and who are the reviewing persons and how they are reviewing, and अगर किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी एक्शंस प्रैक्टिस यूनिट के सामने या उसके पार्टनर के सामने हो हुई है पिछले 3 साल में और उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें इन्फॉर्म करनी है। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, आई थिंक, है ना, हम स्टेप नंबर 2 तक जाएंगे, उसके बाद वी विल स्टॉप। Information to be furnished by peer review board. The peer review board shall call for all the relevant informations from the UDIN director. अभी ऐसा है कि जो भी एश्योरेंस सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट रेंडर करता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, नंबर जनरेट करना होता है, यूडिन। तो वो यूडिन की एक अलग से वेबसाइट है, वहां से यहाँ पे जो कंप्लीट लिस्ट दिया होगा एश्योरेंस सर्विस का, राइट, एश्योरेंस सर्विस का जो लिस्ट दिया गया है, someone is requesting, I think is the same person, maybe, right, वो सेम पर्सन होगा, सो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट आई विल नॉट नाउ एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। अच्छा, सम स्टूडेंट्स में ऑल्सो भी, तो मैं उनको एडमिट कर लेता हूँ, राइट, बट सबको मैं एडमिट नहीं करूंगा। फाइन, जो कंप्लीट लिस्ट दिया होगा तो वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, राइट, पीयर रिव्यू बोर्ड है, वो जो यूडीआईएन है वहां से वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि इसका यूडीआईएन जनरेट हुआ है, एंड शेयर द कंसर्न डिटेल विद द पीयर रिव्यूअर विच सेल फॉर्म पार्ट ऑफ द पीयर रिव्यू, और पीयर रिव्यू का पार्ट है। सिलेक्शन ऑफ सैंपल बाय द रिव्यूअर, the reviewer shall within 15 days of receiving the information from the practicing unit select the sample of the assurance services that he would like to review and intimate the same to the practicing units. तो practice unit ने तो बहुत सारी सर्विसेज रेंडर की होगी, वो उसमें से फ्यू सर्विसेज को रिव्यूअर सिलेक्ट करेगा कि भाई आई विल एग्जामिन दिस। रिव्यूअर may also seek further or additional clarifications from the practicing unit on the information furnished or not furnished. तो जहां पे भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो फर्दर इंफॉर्मेशन भी वो मांग सकता है। प्लान फॉर इनिशियल मीटिंग, सो
and then reviewer will plan for the first initial meeting. The reviewer shall plan for an on-site review visit, an initial meeting in consultation with the practicing unit. The reviewer shall give the practice unit at least 15 days time to keep ready the necessary records of the selected assurance services. तो उसने जो भी assurance services को review के लिए select किया है, वो प्रैक्टिस यूनिट को बताना है कि हमने ये सर्विसेज रेंडर किए, ये क्लाइंट को हमने सिलेक्ट किया है जिसको आपने सर्विसेज रेंडर किए, और उसके डॉक्यूमेंट को हम अच्छी तरीके से एग्जामिन करेंगे और 15 दिन देने पड़ेंगे. The reviewer and the practice unit shall mutually cooperate and ensure that the entire review process is completed within 90 days from the date of notifying the practice unit about its selection for the review. तो रिव्यू के लिए सिलेक्शन के लिए 90 डेज मिलेंगे. तो ये रिव्यू और प्रैक्टिस यूनिट दोनों को एक दूसरे के साथ ताल और मेल बिठा के ये इंश्योर करना है कि पूरा पीयर रिव्यू का काम 90 डेज में खत्म हो जाए. इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So we will keep up to today, up to this stage number 3 we will learn tomorrow. Is it clear? Yes, sir. Okay, sir. Now, Yes, sir. now as far as the tomorrow session is